Well, today we will discuss last topic of this vector calculus, and that one is irrotational fields and solenoidal fields. So, let us define what is irrotational field. An irrotational field F, an irrotational field F is characterized by any one of the following conditions. First one is del cross F is equal to 0, means curl F is equal to 0. So, when curl F is equal to 0, then that field is said to be irrotational field. And consequence of this definition, we have second, circulation integral F dot dr along every closed curve is 0. So, if integral F dot dr, which is known as circulation, if this integral is equal to 0, then again we can say that this field is irrotational field. And third one is F is equal to gradient phi, means del phi, if the domain is simply connected. If the domain is simply connected. So, an irrotational field F is characterized by any one of the following conditions. Okay? अगर ये सेटिस्फाई करती है तब भी आप बोल सकते हो कि ये irrotational field है. अगर ये 0 है, okay, even then we can say that this field is irrotational. Or if F is represented as del phi, then again we can say that this field is irrotational field. Okay? So, let us prove second and third. देखिए जब हमने कर्ल को डिफाइन किया था, ठीक है, कर्ल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वहाँ पर ये इरोटेशनल वेक्टर की हमने बात की थी, इरोटेशन फील्ड की हमने बात की थी. ओके, सो एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज सेड टू बी इरोटेशनल इफ del cross F, means curl F is equal to 0. That one is the basic definition of this irrotational field. Now see, if del cross F is equal to 0, then by Stokes theorem means, expression of Stokes theorem means integral over C F dot dr is equal to integral over S del cross F dot ds. Now since del cross F is equal to 0, so this expression is equal to 0. This means integral over C F dot dr is equal to 0. Okay, that is the circulation along every closed curve is 0. Okay, so this completes the second part. Okay, so we can prove this second part with the help of this definition using Stokes theorem. Okay, now again we know that del cross del phi is equal to 0. We know this result. Okay, del cross del phi is equal to 0. Okay, but in an irrotational field we know del cross F is equal to 0. Now compare this result and this result. Okay, so this means del phi is equal to F. So F is equal to del phi. This means the vector F can always be expressed as the gradient of the scalar function phi, provided the domain is simply connected. Okay, so with the help of this definition, with this identity, okay, we can prove F is equal to del phi if the domain is simply connected. Okay, so always this type of vector, okay, can be expressed as gradient of the scalar function phi. Okay, and such a scalar function phi is called potential. Such a scalar function is called potential. तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल. ओके, तो आपको ये सारे रिजल्ट यूज करके स्केलर पोटेंशियल को इवेलुएट करना है. सो अल्टीमेटली if we prove, if you know del cross F is equal to 0, then function, this scalar point function is said to be irrotational. Okay, irrotational, and this F is known as irrotational field. If circulation is 0, again we can say that this vector point function is irrotational field F, and if F is equal to del phi, even then we can say that this one is a irrotational field. Okay, so in a rotational field F, in a rotational field F cannot be expressed as the gradient of the scalar potential. Okay, तो अगर ये field जो है वो rotational है, in that case we cannot represent this F like this way. Okay, so this can be only possible if F is irrotational field. Okay, now if in an irrotational field the line integral of F, in an irrotational field the line integral of F between the 2 points is independent of the path of the integration. Okay, we can prove this result.
in an irrotational field, the line integral of f between 2 points is independent of the path of the integration. And second, we are going to prove that this result is, this line integral is equal to the potential difference between these 2 points. Potential difference between these 2 points. Suppose A and this point C, okay? A and these 2 points, okay? A, C. अब देखिए यहां से यहां तक आप इस रास्ते से भी पहुंच सकते हो और इस रास्ते से भी पहुंच सकते हो, ठीक है? So in an irrotational field, this line integral over this curve f dot dr is between these 2 points is independent of the path of the integration. आप यहां से यहां इस रास्ते से पहुंचो या इस रास्ते से पहुंचो, आपका रिजल्ट सेम आएगा, ओके? कैसे आप प्रूव करोगे? Let A, B, C, D be any closed contour in an irrotational field F, okay? If A, B, C, D be any closed contour in an irrotational field F, then integral A, B, C, D clear is equal to integral over A, B, C plus integral over C, D, A, okay? यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक. So this integral is sum of this and this, sum of this and this, and this result is equal to 0 because this field is irrotational field. So when f is irrotational, then this integral f dot dr is equal to 0. This means that this integral is sum of two integrals, okay? This result is 0. अब देखिए, this result is equal to this one. This result is equal to minus time ए डी सी, ये है सी डी ए. इसको जब आप रिवर्स करोगे, ठीक है, ए ये है सी डी ए, जब आप इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ओके? और ये माइनस टर्म जो है ये राइट साइड लेंगे, ओके? सो देन इट बिकम्स इंटीग्रल ए बी सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी सी. दिस वन इज ए डी सी, दिस वन इज सी डी ए, ओके? f dot dr. Thus the value of the line integral is independent of the path of integration. So integral f dot dr over this curve ABC is equal to integral f dot dr over this curve ADC. So that one is independent of the path joining the end points. Okay, so इसका जो integral है, that one is independent of the path of the integration. Now further, second part is this line integral is equal to the potential difference between these 2 points. Okay, further substituting f is equal to gradient phi. Substitute this value. Okay, so when you substitute a to c, integral a to c f dot dr, it becomes del phi dot dr. What is del phi? Del phi is gradient. Gradient phi. Gradient phi is I cap curly phi over curly x plus j cap curly phi over curly y plus k cap curly phi over curly z dot. Dr is I cap dx plus j cap dy plus dz k cap. Now this dot this. तो क्या आएगा? कर्ली फाई ओवर कर्ली एक्स dx. So I cap dot I cap is 1, j cap cross dot j cap is 1, k cap dot k cap is 1. So we get integral a to c curly phi over curly x dx plus curly phi over curly y dy plus curly phi over curly z dz. Okay, and that one is nothing but total differential d phi. That one is the definition of total differential d phi. So integral a to c d phi. This means phi c minus phi a. So that one is the difference. That one is the potential difference between these 2 points. So phi is potential. Phi is potential. So phi c minus phi a. तो इस टाइप का जब लाइन इंटीग्रल निकालना होगा, ठीक है, इंटीग्रल ओवर कर्व c f dot dr, and that one is potential difference between these 2 points, means phi c, the value of phi at this point and the value of phi at this point. Calculate the difference, and that difference is nothing but this line integral f dot dr. Okay, so this result is important. Now one more result. If f is a vector acting on a particle, then integral closed this integral f dot dr represents the work done in moving the particle around a closed path. And when this integral is 0, then the field is said to be conservative. That is, no work is done in displacement from a point A to the another point in the field and back to the point A, and the mechanical energy is conserved. So every irrotational field is conservative, right? Every irrotational field is conservative. Reason is because this integral is equal to 0. Okay, so that all about this irrotational field. Okay, तो उन 3 कंडीशंस में अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये जो फील्ड है, दैट वन इज ए irrotational field. Clear? Now one more definition, solenoidal field. How can you define solenoidal field? जैसे आपने irrotational field को define किया था कि उन 3 में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है, then that field is known as
irrotational field. On the same line, a solenoidal field is characterized by any one of the following conditions. First one is divergence f is equal to 0. So if divergence f is equal to 0 means del dot f is equal to 0, then that field is called solenoidal field. तो देखिए जब divergence का concept हमने एक वीडियो में जब शेयर किया था, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा इस टर्म को डिफाइन किया था, व्हाट इज सॉलिनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन. Okay, so if del dot f is equal to 0, then this f is solenoidal vector point function. So that one is the basic definition of solenoidal function. If divergence f is equal to 0, then field is said to be solenoidal, this field. Okay, and second one is flux integral f dot n cap ds. So this one is flux across every closed surface is 0. So this surface integral is equal to 0. So if this surface integral is equal to 0, then f is said to be solenoidal field. And third one is f is equal to del cross v. So if f is solenoidal field, then we can represent f like this way, curl of v, del cross v. अब देखिए ये तीनों रिजल्ट हम कैसे प्रूव करेंगे. Let us prove second. Now if del dot f is equal to 0, okay, if del dot f is equal to 0, then by divergence theorem what happened? Integral over s f dot n cap ds is equal to integral over v del dot f dv, and this del dot f is equal to 0. Clear? This means this result is equal to 0. This means flux across every closed surface is 0. This completes the second part. So if you know this result, then this result is 0. Clear? Now again we know del dot del cross v is equal to 0. This is well known identity. Del dot del cross v is equal to 0, and since in a solenoidal field del dot f is equal to 0, compare this one and this one, del dot del cross v, del dot f. So this means this f is nothing but del cross v. Okay, so f is equal to del cross v. So the vector field f can always be expressed as the curl of the vector function v. Okay, vector function v. So this all about solenoidal field. ठीक है, तो अब इन दोनों फील्ड्स के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं. ठीक है, कैसे आप शो करोगे कि ये सोलिनॉइडल फील्ड है और कैसे आप शो करोगे ये दिस इरोटेशनल फील्ड है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट r raised to power alpha r is an irrotational vector. Irrotational vector. Okay, for any value of alpha, for any value of alpha. Okay, but it is solenoidal only if alpha plus 3 is equal to 0, and as usual capital R is xi cap plus yj cap plus zk cap, and R is magnitude of capital R, this vector R. Okay, so given R is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, then find the value of small r. Small r is x square plus y square plus z square under root. Then what is r raised to power alpha? So r raised to power alpha is equal to this result, x square plus y square plus z square power alpha divided by 2. Okay, then write r raised to power alpha into r. Okay, calculate this. So r raised to power alpha is x square plus y square plus z square power alpha by 2, and r is xi cap plus yj cap plus zk cap. This means let us suppose this one, since r raised to power alpha is scalar and r is vector, so let us suppose this one is a vector. A vector. Okay. Now first part, show that this one is an irrotational. Okay, so to show that a, which is equal to alpha square r, is an irrotational vector, and for irrotational vector we have to show that del cross a is equal to 0, curl of a is equal to 0. Now calculate curl a. So when you calculate del cross a, so del cross a is I cap, j cap, k cap, curly over curly x, curly over curly y, curly over curly z, x r alpha, y r alpha, z r alpha. So when you calculate this determinant, we get the coefficient of I cap, the coefficient of j cap, and the coefficient of k cap. Okay, now solve this component, and this component. Okay, and substitute and see whether this result is 0 or not. Okay, so देखिए curly over curly y, z r raised to power alpha. Let us see. Curly over curly y, z r raised to power alpha minus curly over curly z, y r raised to power alpha. देखिए ये जो z और ये y है ये बाहर आ गए, और ये रिजल्ट अल्फा r raised to power alpha is x square plus y square plus z square alpha over 2 minus y outside and curly over curly z x square plus y square plus z square power alpha by 2.
अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो आपका ये रिजल्ट आया, ओके। सो विद रिस्पेक्ट टू y, सो 2y, क्लियर, एंड विद रिस्पेक्ट टू z, सो वी गेट 2z, ओके। अब आप इसको अगेन सॉल्व करिएगा, ये आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये आपका कॉमन आ गया, अल्फा ओवर 2 माइनस 1, ये आपका कॉमन आ रहा है, एंड विद इन द ब्रैकेट z अल्फा एंड y, z alpha and y divided by 2, and this 2 cancel, so this 2 and this 2 cancel, this 2 and this 2 cancel, okay. So we obtain this result, and yz alpha minus yz alpha, this term is 0, so result is 0. Similarly, this result is 0 and this result is 0, okay. This means del cross A is equal to 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap, which is equal to 0 vector. This means r raised to power alpha r is an irrotational vector for any value of alpha, for any value of alpha, clear, because it is independent of value of alpha, clear. So in this way you can prove this type of problem, okay. Now second part, show that this one is solenoidal only if alpha plus 3 is equal to 0. अब इसको कैसे करोगे आप? अब सोलिनॉइडल के लिए आपको क्या करना है? सोलिनॉइडल के लिए आपको करना है del dot A is equal to 0, आपको ये प्रूव करना है, ओके। अगर ये सोलिनॉइडल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, okay. So this r raised to power alpha r will be a solenoidal vector if del dot v is equal to 0, where A is r raised to power alpha and vector r. अब देखिए del dot A, इसकी वैल्यू को आप इवेलुएट करिए, del क्या है, del आपकी ये वैल्यू है, डॉट, यहां डॉट लगेगा, and A the value of A is this, is equal to 0. Now solve this component, ठीक है। तो जब आप ये कंपोनेंट करोगे तो अलग अलग करके देखिए, करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये फर्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड को करोगे तो ये सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड को करोगे तो आपका थर्ड पार्ट आएगा, एंड राइट साइड इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसको आप करके देखिएगा, ठीक है, ये रिजल्ट इस टाइप से आना चाहिए। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो टर्म है ये आपकी कॉमन आने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, एंड विद इन द पावर अल्फा ओवर 2 माइनस 1, तो यहां से आप ये टर्म कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड पावर अल्फा बाई 2। तो इस टाइप से एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी, सो 3 टाइम, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी आप कर सकते हो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहां से जो रिजल्ट आएगा दैट वन इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म आपकी कॉमन आ रही है, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर के आपका इस टाइप का रिजल्ट बनेगा, और इसको सिंप्लीफाई करके आपका ये बनेगा, फाइनली यू विल गेट दिस, बट दिस ब्रैकेट टर्म इज नॉट 0, सो अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, okay. So when alpha plus 3 is equal to 0, only then we can say that this vector point function means r raised to power alpha r will be a solenoidal vector, okay, if alpha plus 3 is equal to 0. So this completes the proof. तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो टर्म है ये आपकी कॉमन है, ये टर्म आपकी कॉमन है, तो ये कॉमन यहाँ पे लिख दी है, x ये 2 कैंसिल है, और x और x एक्स स्क्वायर, y एंड y वाई स्क्वायर, z एंड z जेड स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अल्फा जो है वो थ्रू आउट कॉमन है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हर स्टेप्स को थोड़ा सिंपल वे से इसको बनाइएगा, एंड फाइनली यू विल गेट दिस रिजल्ट इज 0 provided alpha plus 3 is equal to 0. So this means this vector point function is solenoidal if alpha plus 3 is equal to 0. One more question. If phi is solution of the Laplace equation, if phi is solution of the Laplace equation, then prove that gradient phi means del phi is both solenoidal and irrotational. ठीक है, if phi is the solution of Laplace equation, okay. So what is given? Phi is solution of Laplace equation. This means Laplace equation क्या है? Del square f is equal to 0. And if phi is the solution, so del square phi is equal to 0. So del square phi is equal to 0 because phi is the solution of Laplace equation. Okay. Now this result means del dot del phi is equal to 0. Del dot del phi is equal to 0. Okay. अब देखिए del dot del phi is equal to 0 जब हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो del phi है that one is solenoidal. Okay. So that one is a solenoidal. Okay. So a vector is said to be solenoidal if it satisfies the condition del dot vector is equal to 0.
यही होती है del dot vector is equal to 0. Clear? Here del phi is gradient phi and that one is vector. Clear? So del dot vector is equal to 0 means this vector del phi is said to be solenoidal. Now how can we prove that this one is irrotational? अब irrotational में क्या करना पड़ेगा? del cross del phi आपको 0 बताना पड़ेगा. Okay? So del cross del phi is I j k curly over curly x curly over curly y curly over curly z and del phi is curly phi over curly x curly phi over curly y curly phi over curly z. अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है. दिस रिजल्ट इज दिस. ओके, सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सो रिजल्ट इज 0. ओके, दिस मीन्स the del cross del phi is equal to 0, which is the condition for a vector to be irrotational. So if phi is the solution of Laplace equation, then gradient phi is both irrotational as well as solenoidal. So in this way you can prove this problem. Okay, so hence del phi is irrotational. Okay, so from 1 and 2, okay, from 1 and this expression is 2. Okay, it is proved that gradient phi is both solenoidal and irrotational field. Now next two problems are really important. Okay, so problem is a vector field is given by f is equal to x square minus y square plus x I cap minus 2xy plus y j cap. So f is given, which is a vector field, vector point function. Okay, show that field is irrotational. Field is irrotational. इसका मतलब कर्ल उस वेक्टर का लेने से रिजल्ट 0 आएगा, तभी वो irrotational होगा. क्लियर? And find its scalar potential. So first calculate del cross f. So del cross f is this determinant. When you calculate, when you simplify this determinant, you will get 0. So this vector field is irrotational. This vector field is irrotational. ये प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है. क्लियर? हाँ. Second part is find its scalar potential. Scalar potential means phi आपको evaluate करना है. And you know, since the vector field is irrotational, so f can be expressed as the gradient of the scalar potential. This means we can write f is equal to del phi, and purpose is to evaluate the value of phi, and phi is this scalar potential. अब phi की value को कैसे evaluate करोगे? Now since f is equal to del phi, f is this value, and del phi means curly phi over curly x I cap plus curly phi over curly y j cap. अब देखिए, this vector is equal to this vector. Okay, so the coefficient of I cap and coefficient of j cap are equal, right? This means curly phi over curly x is x square minus y square plus x, and curly phi over curly y is minus 2xy plus y. This and this. Clear? अब curly phi over curly x आपका ये है, curly phi over curly y ये है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? phi की वैल्यू को इवेलुएट करना है. How can we evaluate this value of phi? Now curly phi over curly x is given, curly phi over curly y is given. Integrate. Okay, so integrating one with respect to x and integrating second with respect to y. When you integrate first with respect to x, then keeping y as constant, and when you integrate this with respect to y, then keeping x as constant. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा fy, because y is treated as constant. तो बजाय आप सिंपल c1 लिखने के आप लिखो fy. So phi is equal to fy. जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे with respect to x, you will get the same result. Okay, and in second case phi is equal to minus xy square minus y square over 2 plus constant of integration gx, because we treat x as constant. अब हमारा पर्पस क्या है? fx और gy की इस ढंग से वैल्यू को इवेलुएट करना है कि phi की वैल्यू सेम आ जाए. ठीक है, अब वो सेम कैसे आएगी? when this result is equal to this result. Okay, so equating third and fourth, we obtain this result is equal to this result. अब आप देखिए fy की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और gx की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि आपके ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ जाए. Okay, so fy is equal to minus y square over 2 and gx is equal to x cube over 3 plus x square over 2. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप यहां से आप देख सकते हो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो phi की वैल्यू जो है वो आपकी ये आएगी. ओके, अब ये वैल्यूज आप चाहे यहां सब्स्टिट्यूट करो चाहे यहां सब्स्टिट्यूट करो, gx की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लो या fy की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, phi की वैल्यू तो यही आएगी. क्लियर? सो दैट वन इज ए स्केलर पोटेंशियल. और एक पार्ट और पूछा गया है, ठीक है, and what is that part? Find the integral. Okay, so since the vector field f is irrotational, then this integral f dot dr from 2 1 to 1 2 is
potential difference between these two endpoints means phi 1 2 minus phi 2 1. तो phi की वैल्यू दे रखी हुई है, phi की वैल्यू 1 2 पर इवैल्यूएट करो और 2 1 पे इवैल्यूएट करो. ओके, जब आप ये इवैल्यूएट करोगे दैट वन इज द लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल ओवर r, इंटीग्रल ओवर c f डॉट dr. ओके, तो देखिए यहां पर phi निकाल करके उस इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया गया है. वैसे ये इंटीग्रल डायरेक्टली भी निकल आएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पहले पोटेंशियल निकाला गया है, पहले ई रोटेशन शो किया गया है, फिर पोटेंशियल निकाला गया है, ठीक है, और पोटेंशियल निकालने के बाद आपने ये आर्गुमेंट लगाया है, ठीक है, कि दिस लाइन इंटीग्रल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो जैसे प्रोसेस क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे ही आपने प्रोसेस फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन. A fluid motion is given by v is equal to this, y plus z I cap plus z plus x j cap plus x plus y k cap. Is the motion is irrotational? We can check whether this del cross v is equal to 0 or not. Okay, so when we calculate del cross v, okay, we get this result is 0. This means the motion is irrotational. Very clear. When curl v is 0, this means motion is irrotational. If this result is not equal to 0, then motion is rotational. Clear? So the motion is irrotational and phi is the velocity potential, because in that case v can be represented as del phi. Okay, on the same line calculate v is equal to del phi. So v is this and del phi is this. Okay, so calculate curly phi over curly x, curly phi over curly y and curly phi over curly z by equating left and right. Okay, so when you equate curly phi over curly x is this, curly phi over curly y is z plus x, curly phi over curly z is x plus y. अब तीन आपके रिलेशंस आ रहे हैं. पर्पस क्या है, फाई की वैल्यू को इवैल्यूएट करना, ठीक है. एंड व्हेन यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटेड y एंड z कांस्टेंट. ओके, व्हेन यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटेड x एंड z कांस्टेंट, व्हेन यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z ट्रीटेड x एंड y कांस्टेंट, तो आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है दैट वन इज अ फंक्शन ऑफ, इन दिस केस y z, इन दिस केस x z एंड इन दिस केस x and y. Okay, so when you integrate, phi is equal to y plus z x plus function of y z, in this case function of y z, function of z x, function of x y. अब ये तीनों रिजल्ट सेम है. अब तीनों रिजल्ट सेम है, आपको क्या करना है, f1 f2 f3 की वैल्यू को इवैल्यूएट करना, और इस ढंग से इवैल्यूएट करनी है कि phi की वैल्यू सेम आ जाए. क्लियर? सो व्हेन यू कैलकुलेट, ओके, इक्वेटिंग 1 2 3 रिक्वायर्स, अगर ये तीनों रिजल्ट इक्वल हैं, then we required f1 is x y z, f2 is zx and f3 is xy. So when you substitute these values, then phi becomes this value. Phi becomes yz plus zx plus xy. किसी भी रिलेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा, phi की वैल्यू ये यूनिक आएगी. So that one is the scalar potential. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था, is fluid motion is possible in the incompressible fluid, and as you know that for incompressible fluid divergence v is equal to 0. So the fluid motion is possible if v satisfy the equation of continuity. Okay, and that equation of continuity for incompressible fluid is divergence v is equal to 0. So calculate here divergence v. So divergence v is curly over curly x y plus z, curly over curly y z plus x, curly over curly z x plus y, and that one is 0. So fluid motion is possible. Okay, fluid motion is possible. So in this way you can solve few more problems related to finding the potential, okay, regarding verification of solenoidal field or verification of irrotational type of problems. Okay, so thank you very much. तो इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस का, ठीक है. इसके बाद मैं कुछ और वीडियोस जो हैं वो मैं बनाऊंगा, ठीक है. उसमें इस पूरे टॉपिक में बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं इन वीडियोस में आपके साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ, ठीक है. तो मैं उन प्रॉब्लम्स का अलग से छोटे वीडियोस बना करके मैं कभी भी जब ये बनेंगे तो मैं उनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है. तो आप इस पूरे चैनल से अपडेट रहिएगा, ठीक है. एंड फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट जैसे ही कोई नया वीडियो रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ वेक्टर कैलकुलस और रिवीजन ऑफ फोरियर सीरीज और मैट्रिसेस और इंटीग्रल कैलकुलस जो भी टॉपिक पे वीडियो बनेंगे वो आपको इंटीमेट कर दिए जाएंगे, राइट, अकॉर्डिंगली. सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच.